Hello guys. So there is some issues like I have heard that somebody or some people of you are having problems in doing some numericals and electronic configuration quantum numbers in KL-Cube. Now that is very easy stuff. I do not know why you are facing problems, but definitely if we do some problems today that is given in KL-Cube, then things will be much more easier to us and you will be able to do all the questions very easily. So it is not that I am going to solve them. What I would like, please take your pen and copy immediately, instantly and solve it with me. So I think in case you solve it with me, the job will be done and you can easily do all the problems of KL-Cube. Very easy, so don't have to worry. This specifically this part, that is quantum number and electronic configuration. This part is super easy, very interesting. I don't know again that why you guys are facing problems, but if there is a problem, there will be solutions, right? So let us start. We are starting with problem number 83 of KL-Cube. This is important for ISC board and also CBSE board student. Okay, this kind of problems also come in NEET examinations. Okay. First thing, find the subshell. So we have to find the subshell. N is equal to 4, L is equal to 0. Okay? So what does L is equal to 0 means? We know very well, if L is equal to 0, the orbital is or the subshell is S. If it is 1, it is P. If it is 2, it is D. If it is 3, it is F. That will be enough for us, right? And what does this N represent? That is the shell number, right? Number of orbits. So this should be 4. 4 is the number of orbit and then the subshell, that is S, right? In this case it will be 3 and then 1 means P. Clear guys? Ekdam easy. Next, 4S. Find NLM. So the subshell is given to us. We have to find the quantum numbers N, L and M. Spin they have not asked. Anyhow, so which part is N? This part is N. So N is equal to 4. And definitely L is equal to S means L is equal to 0. So if L is equal to 0, what are the values of M that is possible? If L is equal to 0, then M is also 0. If L is equal to 0, M is also 0. Okay guys? Clear? Nothing more required. Now this is a very good problem. This is going to clarify everything. So here it is said it is a 4F. Okay? 4F subshell. Everywhere you will see it is written as orbitals. Orbital is a wrong concept. Orbital comes up when you say 4Fx into x square minus y square. Orbital is that box. Okay, we are talking about subshells over here. 4F subshell. So 4F subshell means N is equal to 4 definitely. So I can write N is equal to 4. Okay. For F I know L is equal to 3. Okay. Now next is M. So for L is equal to 3, M value can range from -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Clear? It basically ranges from -L, that is -3 over here, to L. Clear guys? Okay. Now spin quantum number. Spin can be only having two numbers, that is plus half and minus half. So this doesn't make problem any further hard actually. Let us go for problem number 86. Here N is given as 3. So if N is 3, what can be the values of L? Values of L ranges from 0 to N minus 1. Clear? Values of L ranges from 0 to N minus 1. So then L value can be 0, it can be 1, it can be 2. Okay? There are so many values of L that is possible. And that is why we can get 3s orbital, 3 and 0. 3 ka 3 matlab third orbit and 0 matlab S subshell. Next we can go for 3, 1 that is P. So 3P. Okay, we can go for 3, 2 that is D, 3D. So these 3 subshells are possible for third orbit. Now what we have to see? We have to see that what are the possible values of M.
सी m वैल्यूज डिपेंड्स ऑन l वैल्यू, ठीक है। फॉर जीरो ठीक है, फॉर जीरो m वैल्यू कैन बी 0, क्लियर है ना। फॉर जीरो, फॉर l इज इक्वल टू 0, सो आई राइट इट दिस वे, फॉर l इज इक्वल टू 0 m वैल्यू इज 0, फॉर l इज इक्वल टू 1 m वैल्यू कैन बी -1 0 1, फॉर l इज इक्वल टू 2 m वैल्यू कैन बी -2 -1 0 1 2, क्लियर। तो इसमें भी कैलकुलेट किया था, l का वैल्यू मालूम है, लेकिन सो मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल इन दिस केस, राइट। नॉट ओनली आई कैन राइट इट जस्ट बाय सीइंग 2, आई विल राइट ओनली दिस, that will be wrong. You have to take each and every case. For l is equal to 0, m is equal to 0. For l is equal to 1, m is equal to -1 0 1. For l is equal to 2, -2 -1 0 1 2. Clear? Maximum value of m is equal to +1. Maximum value. It is given. M का maximum value is +1. So you have to find n, l, m. So you have to go from backward. This is called backward integration, nothing else. So if m is equal to 1, that is maximum value +1. When can m be +1 maximum value? That means the values of m is basically, it can be 1, it can be -1, it can be 0. See, maximum value of +1 occurs over here, and it comes from l is equal to 1, right? When l is equal to 1, then only maximum value of m can be 1. So if l is equal to 1, the orbital is p orbital or p subshell, ठीक है। So this is done, m value we have got, so l value can be 1, right? L value can be 1, L value has to be 1. So if L value is 1, what is the value of n? What are the possible values of n? Okay, they have asked you what are the possible values of n, ठीक है। See, L can be 1 if n is minimum 2, ठीक है। So it can be 3 also, 4 also, so it goes infinity, ठीक है। Because I cannot say what is the value of n. For an orbital they have given me maximum value is +1, ठीक है। It can be 5, it can be 5p orbital, right? In that case it is L, and L is equal to 1, and it will be p orbital only, it will not change. But n cannot be only 2. I don't know what is exact answer given over here, I'll check. This is problem number 87. Okay, okay, here the answer is wrong. Okay, the answer is wrong. L they have given 0, so that is anyways wrong. Anyway, L will be 1. After that n they have given only 2, that is also wrong. N can be 3, n can be 4, any values n can assume, ठीक है। Clear na this one? It can be anything, it cannot be only 2, right? It can be anything, है ना, because L value can be 0 to n minus 1. So if n is equal to 3, then also there is a possibility of L value as 1, ठीक है ना। So that is what it is, nothing else. But that is a particular atom. Okay, here they have said it is for a particular atom. They have not said it is the m value is +1 for a orbital, ठीक है। They have said for a particular atom, पर पूरा atom का maximum value हो सकता है आपका m is equal to +1. So in that case, so definitely L is equal to 1, and this is the maximum value of L possible, ठीक है। So if this is the only value possible, there is no other orbits there, so in that case it will be 2, ठीक है। As per this, I have just taken the excerpts of the problem, that's why I missed it, ठीक है। So it will be 2 only, correct, but L is equal to 0 is given, that is wrong. अच्छा, now L is equal to 2, find the values of m. So this is very easy, m values will be -2 -1 0 1 2, clear। Now L is equal to 4, what are the values of L? L will be 0 1 2 3, it can go from 0 to n minus 1, ठीक है, 0 to n minus 1. This problem 90 they have given, they have said that you have to find out which of this configuration is possible and which is not, ठीक है। So let us see the first one, n is equal to 0, मतलब 0 orbit, it is not possible. Next one, n is equal to 1, possible. L value has to be maximum 0, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि n से एक कम होना पड़ेगा, तो 0 इज करेक्ट। इसका वैल्यू 0 तो इसका भी 0, करेक्ट।
स्पिन का तो ठीक है, माइनस आपको ये ठीक है, दिस इज ओके। नेक्स्ट वन 1 एन वैल्यू, एल वैल्यू 1 नहीं हो सकता, एल वैल्यू इफ इट एन इज इक्वल टू 1 एल कैन बी मैक्सिमम 0, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट n is equal to 1, this is 0, if l is 0 m cannot be 1, so this is wrong again। next n is equal to 2 l is equal to 1 possible, 1 लेस है। उसके बाद फॉर 1 m का वैल्यू -1 हो सकता है, -1 0 1, हाँ। नेक्स्ट ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट दिस वन 2 ओके, 1 लेस करेक्ट, 0 हो सकता है। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 0 1 होता है, तो 0 का पॉसिबिलिटी है। एंड हाफ, ये ठीक है। नेक्स्ट इफ n इज 2 देन l2 नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्लियर। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट आर गिवन इन चुग फॉर your this one, this quantum numbers. So that is why I finished it, so that you don't face any problem while doing them. So you can go through this video and see whether your concepts are correct or not. After this we will be starting now the problems, that is problem number 92 to problem number 105, ठीक है, from Kelchuk we will be starting them. Okay, so just I will pause the video and write down the questions first. Hi guys, so now we will be doing some problems which are given in our textbook on your basically electronic configuration. So more than the quantum numbers part, I have seen that people have been facing problems in electronic configuration in my last only 2 years of experience. Okay, only 2, ठीक है, 2 years of experience I have seen the guys face problems with electronic configuration. The basic reason for that, what I feel is, people don't practice it much, ठीक है। If you continuously use this configuration in any problems in chemistry, first of all most of the problems can be solved by using this electronic configuration definitely. I'll just take this call, I don't know who is it. Sorry, there was a call, so I picked it up. So what we felt is that there is a need of use of this electronic configuration everywhere. This is a new electronic configuration, right, that you are learning. You used to learn 283, 2881 and all those things. So things have got a little bit complicated, but if you get used to it, better you get used to it actually. If you get used to it, you can use this electronic configuration in most of the problems in chemistry. In most of the problems in chemistry, and believe me, around 60 to 70% problems are solved by electronic configuration and nothing else, ठीक है। So you need to practice, that's it. Use it anywhere, everywhere that you can. Just use it. If you want, you can use it everywhere. That's what I am saying, ठीक है। So let us do these problems first. So first of all, you need to know what is the chronology. So somebody has said me that, sir, how to remember all these things, ठीक है, how to remember these things. Now that was the worst thing I have ever heard. How did you remember the algebraic identities when you learnt it in class 9? You remembered them, right? You did them. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. You did them. I know there is a snake type of way that we use, but धीरे धीरे क्या है, you have to get ahead of that. You cannot use all the time, you cannot draw, but at this moment of time it is better you draw like this. You draw because you are just learning. There is no need to be super intelligent, ठीक है यार। सुपर इंटेलिजेंस दिखाने से सब गलत हो गया, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 7x, ठीक है। तो इसको ऐसे करो, हम तो सिखा दिया, इसको ऐसे करो। हम नहीं सिखाया, बुक से हम सीखा, हम तुमको बोल दिया, ठीक है। 4s 3d 4p 5s, then your 4d 5p 6s, then 4f 5d 6p 7s, ठीक है। So this is it, clear? So this is the chronology. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अरे 3D तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही जाता है यार, मोर और लेस। उसके बाद थोड़ा बहुत लगता है, तो करते करते आपका हो जाएगा।
So अभी first one that has been asked is H minus. What is the number of electrons in H minus? In normal hydrogen the number of electron is 1, in H minus it will be 2. So 2 means 2 electrons. So first orbital is basically 1s. So 1s2 हो गया, खत्म, ठीक है ना. Next is Na plus. In sodium how many electrons are there? 11. Now Na plus means it has given away 1 electron. So what is the new number of electrons? 10. So first of all you put 1s2 then 2s2, ठीक है. अब देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले उसके बाद 2p6 हो गया. 2 plus 2 plus 6 is 10. Now F means fluorine. Normally it has number of electrons of 9, right? Now it is gaining another electron. So again 10 electron. So this will be same. So इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है बेसिकली, ठीक है. नेक्स्ट इज Mg2 प्लस. मैग्नीशियम का 12, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचा रहा? 10. अगेन अनदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस लाइक दिस. देखो इजी है ना. इसके बाद स्कैंडियम ना हमको करना पड़ेगा 21 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो धीरे धीरे करो. स्कैंडियम इधर करता हूँ, ठीक है. दिस इज स्कैंडियम. 1s2 2s2 इतना तो लिख ही सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है. उसके बाद 2p के बाद 3s2, ठीक है. 3s के बाद 3p6, ठीक है ना. अभी कितना हुआ देख लो. 2 plus 2 4 6 10 10 नहीं 18. You need another 3. So after this comes is your 3p 4s. So 4s2, ठीक है. 4s2 again another 1 electron is left. So I'll put 3d1, ठीक है. Clear? 3d1 हो गया. So this is scandium. For chromium 24 is equal to, please do chromium 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. This will be same basically 4s2. After that you will come at 3d4, but we know chromium has an anomalous configuration. So this will be 3d5 and this will be 4s1. Now somebody has asked me, sir, whether I have to write this 4s after this or before this. According to n plus l rule you should write it before this, ठीक है. But if somebody, in some cases teachers insist that you write this shell after this just for the look of it, nothing else, ठीक है. So what, and in some cases while you calculate effective nuclear charge which will be only required for advanced, so will you calculate that, then in that case you need to write this on this side, ठीक है. But that is not in the basic syllabus of class 12, so we don't need to do that. We can keep it like this. But if your school teacher says you to put it this way, please do it that way, ठीक है. वही करना है बस. जो बोलता है सुन लो, क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, कैल्शियम is 20 electrons. So I think you can do now 1s2 2s2 2p6 3p 2p3s 3s2 3p6 4s2 हो गया 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. क्रोमियम ऑलरेडी हो गया है, अलग से करने का जरूरत नहीं. Br minus. So here actually what they have asked is maximum number of unpaired electrons in chromium, calcium and bromine. So इसमें तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर्ड है. पूरा फील्ड है, सब पेयर्ड है. इसमें है, देखो इसमें है, इसमें कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक है और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो इन केस ऑफ क्रोमियम देयर इज टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नेक्स्ट इज ब्रोमीन माइनस. अभी ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन इज बेसिकली हेलोजेंस, राइट. सो इट इज गोइंग टू हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस लेवल पे, क्योंकि स्टिल नाउ वी आर नॉट थ्रू विथ periodic table chapter, so you will not be knowing what will be the exact outer electronic configuration of the halogens, ठीक है. लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप क्लोरीन का करके देख सकते हो ना. क्लोरीन का हम कर लेते हैं. क्लोरीन का तो हम लोगों को मालूम है, आपका एटॉमिक नंबर 17 है ना. 1s2 2s2 2p आपका 2p6 3s2 3p5, ठीक है. So definitely we know one thing for sure, this is of the last orbit, right? 3 last orbit. तो last orbit configuration of the same group remains same, है ना. last orbit configuration will remain same. So in case of क्लोरीन के बाद आता है आपका ब्रोमीन. तो ब्रोमीन में क्या आएगा? ब्रोमीन में ये अगर लास्ट ऑर्बिट पे 3s2 3p6 है, तो ब्रोमीन में आएगा 4s2 4p6,
बट व्हाट इज सेड इज इट इज ब्रोमीन माइनस, दैट मीन्स 4p5, ठीक है, it is bromine minus, so it will accept one electron and it will be 4p6, है ना, it will accept one electron and it will be 4p6. So in that case it will have no unpaired electrons, so bromine minus will have 0 unpaired electrons, ठीक है. Nice question, this is a very nice question actually. So you can do it by just understanding what is happening with chlorine and fluorine, ठीक है. ब्रोमीन का पूरा लिख के भी कर सकते हो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से. चलो मैं देख लेता हूँ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है. ओके 35, सो 35 लिख के भी आप कर सकते हो, ठीक है. तो 35 मतलब ब्रोमीन माइनस मतलब 36 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो 36 इलेक्ट्रॉन लगाओ हो जाएगा, और 4p6 ही आएगा, ठीक है. दैट ऑल्सो यू कैन डू. हियर इट इज हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स of the valence shell electrons, ठीक है भाई, कर लेंगे. 12 electrons means 1s2, 2s2, 2p6, इसका बड़ा हो गया, उसके बाद 3s2, खत्म, है ना. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो वैलेंस शेल में है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n को लेना है, वैलेंस शेल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n को लेना है, तो ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसका क्या निकालना है आपको, क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर होता है n कितना होगा 3, l कितना होगा s ऑर्बिट, s सबशेल 0, m फिर कितना होगा, अगर l 0 है तो m 0, और देखने का जरूरत नहीं, और s प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट द एनर्जी कंपेरिजन्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. आई हैव सेड इन दिस केस व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, l एंड देन n प्लस l, ठीक है. तो in this case what is n means this one, nothing else, so 3, right, this is 5, this one 3, 5, 4, 6 खत्म. नेक्स्ट l, s का 0 होता है 0, p का 1, d का 2, f का 3, p का 1, s का 0, p का 1, ठीक है. now you add them 5, 4, 5, 8, 5, 6, 7, get the least value. Least value is 4, so this will having the least energy, 3p, done, right, less than. Next one ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. These are matching, so if things match we take the lower value of n, ठीक है, lower value of n. तो इसके केस में n का वैल्यू कितना है, this is basically 5, this is 3, so this is 4, this is the lowest value, right. तो ये लेंगे 3d. उसके बाद दिस इज द लोएस्ट वैल्यू 4p, उसके बाद दिस इज द वैल्यू, सो 5s. सो ये हो गया. नेक्स्ट, ये भी हो गया, राइट दे दो इसको. नेक्स्ट है अपना 4 हो गया, 5 हो गया, वी हैव टू गो फॉर 6s, देन 7 6p, देन 8 5f, ठीक है. इसके बाद तो कुछ था नहीं, इजी था, ठीक है, कुछ मिस नहीं हो इसीलिए टिक मार के किया और कुछ नहीं, ठीक है. सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, नथिंग एल्स. सो आई ड्रॉप दिस, आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग क्वेश्चन अगेन. सो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड. सो वी हैव फिनिश्ड अप टू प्रॉब्लम नंबर 95, राइट, 96. सो विल गो फॉर नाउ 97, राइट. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन s2 माइनस, s2 माइनस. अभी सल्फर है यार, सल्फर का इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 16 एटॉमिक नंबर है उसका, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली 16 एटॉमिक नंबर एंड दिस इज 32. सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये है आपका p प्लस n का वैल्यू, है ना, p प्लस n का वैल्यू ये है, ठीक है. और प्रोटॉन भी चेंज नहीं होता, तो इसका प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो 16 होता है, ठीक है ना. तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 होगा. अभी s2 माइनस बोला है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, दिस इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो s is going to accept 2 electrons to get s2 minus. What is this process? Acceptance of electron. This is reduction, ठीक है, this is reduction. हाँ, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट, सो at this moment it has accepted 2 electrons. Previously it has how many electrons, 16. So 2 electrons ऐड कर दो, कितना आएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 98. ओके, हियर इट इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन के कौन सा आयन है. अभी कैसे पता चलेगा यार कौन सा आयन है, ठीक है, कर लेंगे.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 2p6 3s2 3p6 3d3. So this is the condition. They have asked me what is the ion over here. तो दिस इज अ ट्राई पॉजिटिव आयन, वो भी बोल दिया इसमें ट्राई पॉजिटिव आयन है, ठीक है भाई। तो ट्राई पॉजिटिव आयन है मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब इसके साथ हमको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, इसके साथ हमको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अभी देखो 3p के बाद 3d थोड़ी आता है, 3p के बाद कभी 3d नहीं आता, 4s आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है गिनो, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 3 21 इलेक्ट्रॉन। सो 21 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, सो मीन्स इट इज 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 24 इलेक्ट्रॉन है। तो 24 इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली इट वाज 24 एटॉमिक नंबर। सो क्रोमियम है यार, और क्या है, सो Cr3 प्लस, दिस इज Cr3 प्लस, नथिंग एल्स। तो इसका गिनो कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 3 का उसको साथ ऐड कर दो, पहले क्या था वो क्रोमियम हो गया, उसके बाद वाला स्कैंडियम है, तो कर सकते हो, छोड़ो। Next is 1 unpaired electron in an atom contributes to a magnetic moment of 1.1 Bohr magneton. Calculate magnetic moment of chromium. See, in previous problem we have already seen that chromium has 6 unpaired electrons. So पूरा configuration लिखो, उसमें 6 unpaired electron आ रहा है, 3d5 4s1, तो 6 into 1.1, एक इलेक्ट्रॉन से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है 1.1, क्वेश्चन में दे दिया है। सो 6 into 1.1 इट विल बी 6.6 bm, बस 99 हो गया। उसके बाद 100, ओके। यहाँ पे हियर दे हैव सेड यू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर्स, ठीक है, दे हैव सेड यू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर्स। So they have said me the outermost electron number as 3s1, next 2p3 3p5, ठीक है 2p3 3p5 and they have asked me to find out the atomic number। ये outermost है तो इसके पहले का सब तो फील्ड होना चाहिए। So 3s1 के पहले क्या आता है 2p, so 2p6 होगा, उसके पहले क्या आता है 1s 2s 2p, so 1s2 2s2, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। तो 6 + 4 11, so this means 11 electrons were originally there और atomic number is 11, ठीक है। इसका क्या होगा 2p3 पहले लिख लो, 2p3 मतलब उसके पहले क्या आता है 2s, so 2s2 and 1s2, so 2 + 2 + 3 7, ठीक है। उसके बाद 3p5 लिखो, 3p5 यू फर्स्ट राइट, उसके पहले क्या आता है, हाँ 3p के पहले 2p 3s2 2p6 2s2 1s2, so 6 + 4 10 12 5 17, ठीक है, क्लियर है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच एटम इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग, ठीक है गाइस, विल सी दिस हीलियम 2s1, दिस इज अनदर वे, दिस इज बेसिकली condensed way of writing electronic configuration. What is helium? Helium means 2 electrons, that is 1s2 2s1, so 2 + 1 3 electron, 3 electron means lithium, this is lithium, nothing else, lithium, here it is 3 7 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नियॉन 3s2 3p3, ओके, नियॉन 3s2 3p3, so neon means basically atomic number 10, so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, so you can add now up till this 10 12 15, so phosphorus 15, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दे हैव सेड argon 4s2 3d1, argon 4s2 3d1, argon 4s2 3d1. So one thing you can do, this time you can write the atomic numbers like this, or what you can do, you directly know that argon is 18 + 3 21 scandium, ठीक है, क्लियर।
Next question is quite easy, under 102, which are the isoelectronic species. Just you have to calculate the number of electrons in each of them and then have to find out the groups which are having same number of electrons. That's it. So that is basically class 10 stuff. Number of electrons in H2 2 plus. This is nice. H2 2 plus. So H2 means 2 hydrogen, 1 hydrogen has 1 electron, H2 means 2 electrons. So 2 electrons are there, and after that 2 plus means you are taking out 2 electrons, right? 2 plus means, so H2 2 electrons, 2 plus 0 electrons. So this has no electrons. H2 2 plus has no electron. Next O2 plus. Okay, I'll do it over here. Hope is it visible? O2 plus. Oxygen means 8 electron. Oxygen means 2 oxygen means 16 electron. 16 electron. So minus 1 electron because it is plus. So it will be 15 electrons. ठीक है ना? Clear? An atom of an element has 29 electrons and 35 neutrons. ठीक है भाई? 29 electron है, 35 neutrons. I'll rub this. 29 इलेक्ट्रॉन्स है, 35 न्यूट्रॉन्स है. ठीक है, बोल दिया है भाई. एटम ही है, कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं बोला है. कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स विल कैलकुलेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इजी क्वेश्चन है यार. सो एटम बोल दिया, इट्स नॉट ए आयन, राइट? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो सेम, 29 प्रोटॉन्स. सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यू कैन इजीली राइट 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6 कितना हुआ आपका 18. यू नीड अनदर 11. सो 4s1 3d10 कॉपर कॉन्फिगरेशन. 3d10 मोर स्टेबल. इट कैन बी 4s2 3d9 बट नो 4s1 3d10 फुलफिल्ड. ठीक है, तो क्लियर है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यू कैन ऑल्सो राइट दिस. देखो 2 + 2 + 6 दैट इज 10 + 8 18. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. आर्गन 4s1 3d10. This can also be written. ठीक है guys. Next is which of the following orbitals are possible? Okay, 1s 1p 2s 2p 3f. 1p 2s 3p 3f. यही बोला है ना? 3p बोला है नहीं, 2p बोला है. सॉरी 2p. So in this case you first write the n and then write the L. ठीक है, तो 1 मतलब this can have a maximum value of 0. So in this case it can be S, it cannot be P. So this is wrong. 2 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है. So 2S is a possibility, because 2 0 हो सकता है. Next 2P. 2 मतलब मैक्सिमम आपका जा सकता है 1 तक. So 2 1 मतलब P. So this is also possible. ठीक है. Next is 3f. 3f मतलब ये 3 है, तो ये मैक्सिमम आपका 2 हो सकता है. 2 का मतलब D हो सकता है, F तक नहीं जा सकता है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो आई हैव सॉल्व द कंप्लीट KL फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर आई गेस 83 to 105 right now, right? So after this I don't think anybody should have any problem. Those who are specifically preparing for boards, they need not do the competitive examination once at this moment. There is no requirement actually. Or another thing I would say, those who are preparing for NEET, they don't need to solve those IIT JEE advanced और इवन IIT JEE स्क्रीनिंग का कुछ क्वेश्चन है. देखो IIT JEE स्क्रीनिंग जब होता था तब वो दूसरे लेवल का था, छोड़ दो. 2003 2004 2005 तक हुआ था. सो वो छोड़ दो. नीट के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो, IIT JEE स्क्रीनिंग और एडवांस का जो क्वेश्चंस है एंड ऑफ द चैप्टर में, वो सब छोड़ दो. ठीक है, बाकी आप लगा सकते हो. ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है गाइस. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू गाइस.